मुझे इंडिया के बाहर पढ़ाते हुए करीबन 9.5 साल 10 साल होने को है एंड आई वांट टू शेयर विथ यू 3 very important learnings that I had which has got nothing to do with schools, recruitment, salary, anything of those sort, but these 3 things are a life changer for me. February 2016 में मुझे मेरा पहला इंटरनेशनल जॉब ऑफर मिला दुबई से. So of course I was very excited. It was my first time going outside India and I'm going to teach over there. And since then, it's 2025 now. I have taught in Dubai, I have taught in Bali, Indonesia, and currently I'm in China. इन तीनों कंट्रीज में पढ़ाते पढ़ाते इतने सालों में the first and the most important thing which I've learned is how to immerse yourself and how to accept cultural diversity and accepting differences. हम लोग बहुत बात करते about we need to accept differences, we have to, not everybody is the same, but जब तक आप एक्चुअली उस कंडीशन में रहोगे नहीं, जब तक आप वो डाइवर्सिफाइड एनवायरनमेंट में काम नहीं करोगे, it becomes really really difficult. Now when I worked in Dubai, वहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटीज़ थे. लैंग्वेजेस आसान था बोलना बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल दे स्पीक हिंदी. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लोकल्स बट द मास crowd that you would interact with every day, they all speak Hindi, majority. इंग्लिश भी बोलते तो कोई दिक्कत नहीं थे. खाने का बतेरा ऑप्शन था. But especially during certain periods of the year when they were having their Ramadan or certain festivals, over that period of time, you had to adapt yourself. I had to adapt myself to accept the differences of their living, the way they lead their life. Now, fortunately for me, I have stayed in shared apartments. So, wahan pe I had roommates, those who were Egyptians. I had roommates, those who were from Azerbaijan. I have had roommates, those who were from different parts of the world. So, every day you get to see and you get to live different cultures. Their food habits are different, their way of sleeping is different, their way of drying clothes are different. It might sound very interesting, but when you actually live in that moment, sometimes it's confusing, like ye kya kar raha hai? But over a period of time, you get to see how vast and how fascinating different cultures are. And that's a fantastic experience. You need to live it. You need to live it to know what I'm talking about. Now, from there, 2020, thanks to COVID, I would say, I moved to Bali, Indonesia. It's an island. वहाँ पे मुझे ना उनका लैंग्वेज आता था, ना कम्युनिकेट करना उतना आसान था दुबई जैसा. फूड चॉइसेस वर कम्प्लीटली डिफरेंट. रिसोर्सेज मिलना बहुत मुश्किल था बिकॉज इट वॉज एन स्मॉल आइलैंड, नॉट इवन अ बिगर प्लेस लाइक जकार्ता. तो वहाँ पे initially it was a struggle for me, a big struggle for me. But over a period of time, I got to see how fantastic their cultures were, how amazing and welcoming they were as people. To be honest, I have never ever met such warm, down to earth and welcoming people as of date. They are so humble, they are so nice, they are so welcoming. It's unbelievable. They will go way beyond their means to help you, but in return, they don't even expect. In return, probably the only thing that I could have given to them was respect and me accepting them the way they are. Bali mein, there is a very interesting day which is called Nyepi. If you have gone to Bali, you might be knowing about it. Nyepi is basically hamara New Year jaisa. But their New Year celebration is completely different than ours. हमारे न्यू ईयर पे पार्टी होता है, मस्ती, गाना बजाना, and there's nothing wrong about it. That's the way we celebrate. Their way of celebrating New Year is absolutely opposite. There's no electricity for 24 hours. There is no light that you can switch on for 24 hours. Internet आजकल रहता है, पहले मैंने सुना है वो भी बंद हो जाता था. People just go back to their home, they switch off everything and they introspect. They meditate, they don't even cook. They spend 24 hours with themselves thinking about how the past year has been,
how they have contributed in the growth of the island, growth of their society, and how they can do better. It was a fantastic experience. First year, it was creepy, it was scary because after sunset, the entire island became pitch dark and it was pin drop silent. कोई आवाज़ नहीं कहीं से, कोई गाड़ी नहीं, कुछ नहीं. आप घर से बाहर नहीं जा सकते हो. But the second year, I actually enjoyed that moment. And now, sometimes I feel that maybe someday I would like to go back to Bali during Nepi to celebrate that peace, that quietness. That's amazing. Unless and until you be there, आपको मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि वो कितना एक immersive experience होता है. Then I moved to China. And this is a different ball game altogether. ना मुझे लैंग्वेज आता है, 2 साल होने को है, पर मुझे 1-2 वर्ड के अलावा कुछ बोलना नहीं आता है. इनका फूड स्टाइल completely different है. We have a lot of wrong ideas about the kind of food they eat, but their food style is completely different. Their way of living is completely different. Technologically, they are extremely advanced. And again, one thing which I have seen is the moment you start accepting a fact that you have come to their country and आपको उस जगह का respect करना है. The moment you start respecting the country that you are in, the moment you start respecting their culture, their language, their people, their way of living, most of the times, till date, in this past 9.5 years, I have got respect and acceptance back. Nobody is expecting you to lead your life the way they are, the country that you are in. But आप उनका इज्जत कीजिए. उस देश का रिलीजन का, उस देश का वे ऑफ लिविंग का, उस देश का उन लोगों का जीने का तरीके का अगर आप रेस्पेक्ट करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे डोंट बॉदर यू एंड कम एंड टेल दैट यू हैव टू चेंज योर वे ऑफ लाइफ एज पर देम. सो दिस वाज माय फर्स्ट बिगेस्ट लर्निंग, cultural diversity and accepting differences. To do that, you need to live it. You can't have it as a tourist. Secondly, when I moved out of India, I felt this is my absolute chance of being independent. Now, being independent is not being carefree. To learn that, I had to move out. आपको कोई नहीं पूछेगा कि आपका सैलरी आप कहाँ खर्चा कर रहे हो. आपको कोई नहीं पूछेगा कि अगर आप कोई गलत काम करने जा रहे हो, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली. आपको कोई नहीं पूछेगा क्या आपने आपका कपड़ा सही टाइम पे धोया है ताकि वो सूख जाए, ताकि आप मंडे को या जब भी आपका ऑफिस टाइम हो या काम का टाइम हो वो रेडी हो. कोई नहीं पूछेगा आप क्या खा रहे हो, कोई नहीं पूछेगा आपका ग्रॉसरी है कि नहीं, कोई नहीं पूछेगा आपने घर साफ किया है कि नहीं, कोई नहीं पूछेगा आपका तबीयत कैसा है. सो आप 100% यू आर ऑन योर ओन. एंड लिविंग दैट लाइफ is not very easy. It looks absolutely fancy, absolutely hunky-dory from outside कि भाई तू तो दुबई में है, तू कल चाइना में है, आज बाली में है और तू कुछ भी कर सकता है, तुझे कोई नहीं पूछ रहा है. कभी भी अपने अपार्टमेंट में वापस आओ, कुछ भी बनाओ, कुछ भी खाओ, कभी भी उठो, कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं बोलेगा ये करो वो करो. But you realize how important it is to be disciplined, to be responsible, once you start living the life outside your home country. I would even say outside your hometown. And for that, it needs you to realize the need of all those components. आपको कोई भी बंदा 1000 बार बोल सकता है कि ये चीज़ इस टाइम पे ऐसे ऐसे करना, बट जब तक आपको वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा, जब तक आप वो अपने आप से जिएंगे नहीं, जब अपने आप से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं ग्रो करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला भाई. यू विल स्ट्रगल, यू विल लूज आउट ऑन मनी, यू विल लूज आउट ऑन हेल्थ, एंड ट्रस्ट मी, व्हेन यू आर अब्रॉड, द बिगेस्ट थिंग दैट यू कैन टेक केयर ऑफ इज योर सेल्फ, योर हेल्थ. Because no matter how many friends you have, how many good colleagues you have, they are also having their own life. They are also having their own troubles, own challenges. They are also probably living outside their home country and have to manage stuff on their own. So from the time you wake up, at what time you will wake up, till the time what time you will sleep, आप रात को 2 बजे तक जगे रहिए, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है. आप रात को 8 बजे सो जाइए, उसमें भी किसी को फर्क नहीं पड़ता है. पर ये आपको डिसाइड करना है आपको कब बिल पे करना है, आपका हेल्थ का कौन सा एस्पेक्ट आपको देखना है, आप एडवेंचरस स्पोर्ट्स कब करने जाएंगे कि नहीं, इसका रिस्क कितना है, क्या आप वो रिस्क बेयर कर सकते हैं कि नहीं. ये इंडिपेंडेंस है, ये केयर फ्री एटीट्यूड नहीं है भाई.
सो जो बाहर से दिखता है कि जो लोग बाहर रहता है, कुछ भी खाता है, कुछ भी करता है, कभी भी आओ काम पे, कभी भी जाओ काम पे, ऐसा नहीं होता है बॉस। वो अपने घर में वो कंफर्ट रहता है, बाहर पे वो कंफर्ट नहीं रहता है। सो मैनी अ टाइम्स व्हेन आई स्पीक टू माई फ्रेंड्स इन इंडिया, वो लोग कभी कभी ये भी बोलते हैं कि हाँ भाई, तेरे से बात किए बरसों हो गए। हो जाता है, बरसों हो जाता है, महीना हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई हेल्प नहीं है। जो लोग बाहर रहता है उनके पास यूजुअली हेल्प नहीं होता है। घर पे हेल्प मिलना कंपैरेटिवली आसान है, मैं नहीं बोलता सबको मिलता है, कंपैरेटिवली आसान है। बाहर पे वो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है। सो एवरी सिंगल थिंग ऑफ योर लाइफ नीड्स टू बी डन बाय यू, नो वन एल्स, nobody else, because they are stuck in their own cycle of life. So this is the second most important thing which I learned, that is being independent is not being carefree. Lastly, the most important thing that you will like or you will learn about after you work outside, which I did, is knowing yourself better every single day. Like I said, जब आप घर पे होते हो आपका एक सेफ्टी नेट होता है। आपके घर में 2 मेंबर हो चाहे 20 मेंबर हो, आपके पास एक सेफ्टी नेट होता है। आपको पता है ये मेरा मोहल्ला है, ये मेरा शहर है, मुझे पता है कहाँ पे क्या मिलता है, मुझे पता है ये होने पे मैं किससे कांटेक्ट करूँ, अगर कुछ अच्छा हुआ तो मैं किससे सेलिब्रेट करूँ, अगर कुछ बुरा हुआ तो मैं किससे मदद मांगूँ। पर द मोमेंट यू कम आउटसाइड you get to see yourself in a very raw, vulnerable position. आपको समझ में आता है आप किस हद तक पेन बर्दाश्त कर सकते हो, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल। एंड फिजिकल से ज़्यादा, ट्रस्ट मी, मेंटल एंड इमोशनल पेन, इट्स नॉट ईजी। और जब आप बाहर काम करते हो, घर से बाहर रहते हो, काम के सिलसिले में हो, किसी के सिलसिले में भी हो, यू गेट टू नो योर बाउंड्रीज, यू गेट टू नो आप अपने आप को कितना पुश कर सकते हो, आपका टॉलरेंस लेवल कितना है। एंड व्हेन आई से टॉलरेंस लेवल, इट्स नॉट अबाउट ओनली physical pain or mental pain or even emotional pain. Tolerance level about different kinds of food that you eat, tolerance level of kind of people you meet, tolerance level of discrepancies that you will have in life, tolerance level of injustice that you will face. And that's the reality. That is the reality. There will be discrepancies, there will be favoritism, there will be negative stuff happening every single day. What's your tolerance level? Do you respond or do you react? How do you react? At what time do you react? So these are all different things that you get to learn, and nobody can teach this to you sitting in your comfort zone at home. घर में बैठ के आप वीडियोस देख सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो, अपने आप को रेजिलियंट सोच सकते हो, पर आप कितना रेजिलियंट एक्चुअली हो उसके लिए आपको सिचुएशन में जाना पड़ेगा। And when I'm saying this, I'm not saying this from any level of disrespect for people, those who stay in their house and they have led their life or still living their life fantastically. Because at their workplace is where they're getting tested. At their home, in different relationship is where they're getting tested. But what happens is, the moment you're outside your comfort zone, जब आप बाहर निकल के आते हो, तब वो threshold और बढ़ जाता है, आपका testing का variations और ज़्यादा बढ़ जाता है। So you get to know who you are in reality very, very well. It's in front of you, it's raw, it's unfiltered, and that's where you get to see yourself from a completely different perspective, and people will start to see you from a different perspective as well. आप लोगों में जो लोग भी बाहर रह चुके हो, आपने गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ बहुत बार सुना है ये सारे सेंटेंसेस, तू तो बदल गया है, तू पहले जैसे आजकल और फोन्स नहीं करते, तेरे पास तो वक्त ही नहीं है हमारे पास, हाँ भाई तू ये एक है काम करता है और तो कोई काम करता नहीं है, इसको देखा है ये कितने बार अपना देश आता है अपने घर वालों से मिलने, तू तो आता ही नहीं है। एंड इनिशियली मैं ना ये सारे सेंटेंसेस को, ये सारी चीज़ों को फाइट करता था, एक्सप्लेन करता था कि भाई मैं हर साल ऐसे नहीं कर सकता था, मैं हर बार इतना फ्रीक्वेंटली के साथ घर नहीं आ पाता हूँ, मैं हर जन्मदिन में, मुझे शायद अपने जन्मदिन पे घर हुए बरसों हो गए, बहुत साल हो गए, मैं त्योहार मिस करता हूँ, घर वालों में सिचुएशंस आता है जो मैं मिस करता हूँ। एंड यू विल नेवर एवर बी एबल टू एक्सप्लेन इट टू एनीवन, एंड व्हेन आई से एनीवन, टू एनीवन, and it's not their fault, they're asking those, they're expecting those out of emotion, out of care, out of love. But your situation, it's only you who know it, और ये तुम किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते।
बट तुम क्या सीखते हो? तुम ये सीखते हो तुम कितने हद तक ये पेशेंटली डील कर सकते हो, कितने हद तक तुम इसको अब्जॉर्ब कर सकते हो, और किस मोमेंट पे आप रिएक्ट करोगे. So these were three of my very important learnings that I've had in these nine and a half years outside India. Number one, cultural diversity and accepting differences is very important. It's very important. Number two, being independent is not the same as being carefree. And number three, the most important, you get to know yourself, no one else better than you.